questions at the time of interview? Ma'am, there was an incident which happened during the interview. Uh, my interview was scheduled between 10:30 to 11:30 a.m. Mm-hmm. But I waited for there about half an hour. And Mm-hmm. when I didn't get connected, I thought there's a technical error. Mm-hmm. So I left the meeting and I started calling the HR. Okay. So uh, till the time they reached to me, Mm-hmm. 1 hour has time has passed by. So Mm-hmm. my interview started at around 12:15 p.m. So when the interview, the first question of the interview was, should I take your interview or not? You're not in your scheduled time. So I got very nervous and my interview started with a sorry. So that was a very big minus point, I think. Mm-hmm. And after that, he asked me about the gap in my career. Like I did my graduation in 2018. Mm-hmm. So he asked me about that. Mm-hmm. So I was into sports for about 6 years now. So I told them about that I wanted to pursue sports as my career, but Mm-hmm. due to this lockdown, I had to come back to the academics. Mm-hmm. So I told them about these all things, Mm-hmm. and after that, he asked me about the company. That what do you know about the company? Mm-hmm. I told them about the company, and Mm-hmm. he asked me about the salary expectations, which I Mm-hmm. told them that since I'm a fresher, I'm expecting the basic amount of 3.5, Mm-hmm. and after that, he asked me to that I am ready to sign a bond with the company of 2 years. Mm-hmm. To which I replied that yes, I am ready. And Mm-hmm. he also asked me about the night shift, whether Mm-hmm. I'm comfortable with the night shifts or not. So I agreed to that. Okay. So, what do you think? What was that particular question which could be a reason of not being selected? Can you just go back and think about it? I got that point. I now very Yes, well know that could be one of the question which might have been a reason of not being selected. I think the gap in my career, ma'am. I think that's the question which I have, which I must have failed to No, convince him. no, you very well answered that question because you were able to fill up the gap by saying that you were a sports person and you were involved Yeah. in sports activities. That was a Yes. good answer because you had a valid reason to cover up that career gap. But there is something more important. Okay. What? About the salary expectations, ma'am. No, Maybe. you were good with that question as well because you knew that what was the basic salary and you asked for the basic salary. So no, you were good with that question as well. I want you to introspect first and then I will tell you. Maybe I should have not started the interview with him. Sorry. No, that was also perfectly fine because many of the students or candidates who applied for Excel Dynamics did encounter these of the technical glitches while interview was scheduled. So that is also Okay. perfectly fine. Should I? Yes, ma'am. Please. Yeah. As far as your conversation, our conversation is concerned, I feel that you're good with your comm skill, and that was the reason you were selected in the first round as well, which was written, round. Maybe you're good in your Yes. written as well as in your verbal communication in regards to Yeah. English language. As far as I can make out about the rejection point is you told that you would like to make your career in sports. First thing. Okay. Second, what you answered is you said because of lockdown, you were giving an excuse that because there is a lockdown, again, you would like to come into academics and you would like to join Excel. So if an HR finds a candidate who is not stable, are you getting my point? Because you Yes. Yes, ma'am. gave that excuse that lockdown is excuse for you. Now, what Okay. if lockdown would be over and things will be back to normal? That means that time there will be an stability issue with you as a candidate. Maybe you will again switch back to your spots leaving XLD. Got it? Yes, ma'am. So this is the main concern which I can think about because of my experience working with these kind of students domains and questions. I feel this could be one of the major issue of your rejection because you come out to be as a very sincere candidate. Whatever you told right now,
is perfectly fine. You were able to communicate well. You were a kind of person who was down to earth. You did apologize because of that technical glitch, whatever happened. You told them very well that you know about XLD, you know what the package is. You were ready. You said yes for all the questions, that you are ready to relocate. You are okay with night shift. So, what I find is there is a gap, which might be a reason. I strongly feel that this is only one of the reason that you were not selected, is they might find you as a person who won't be stable and would not stick with the company for a longer time, because you are joining that company because you are not getting something else because of this COVID-19, this lockdown in your sports field. Can you connect this? If Yes, ma'am. you were a recruiter and if somebody told you that सर इसके कारण ना अभी मैं आना चाह रहा हूँ, या वो लॉकडाउन हो गया तो इसलिए मैं अब वापस इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ, तो ये स्टेबिलिटी वाला इशू हो जाता है. बिकॉज व्हाट विल हैपन विद XLD, as soon as they will select you, they will ask you to go for 3 months of not internship but training program, which they do for fresh whomsoever they hire. तो 3 महीने का जो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज, because they are providing Yes, ma'am. training to you all. So I think you have just lagged behind in this one of the question. If you were saying, if you presented this answer like because you want to be a part of XLD, because you have done your BCom or BBA, right? You did your BBA. Yes, ma'am. Baby. Yes, You did your BBA. So you could have very well answered this question that, sir, I just want to be a part of XLD because, yeah, you are looking forward to be a part of this company. But because of okay. that extra answer which you gave them, that due to this, COVID thing, and you always Yeah. wanted to pursue sports as your career. So ye wala issue is the major issue. So I Ma'am, feel, I mm-hmm, yeah, ma'am, go ahead. ma'am, I gave this answer because he asked me that why didn't I continue my studies further when I came back to the academics. So You in could. that question, Mhm. So yes, ma'am. it was perfectly fine, but you would have not said that. You could have always said that you are a kind of sports person. Now, I will tell you how you could have related this answer. Again, when Okay. you will reapply with XLD, and again, if this question arises, you can very well say that you were always inclined towards sports. You were always passionate about sports. So is that is the career gap which is visible because you were into sports. You were dedicated to sports. But Yes, ma'am. now there is something which you would like to earn bread and butter also. You would like to make your living, and now you would like to start your career, and you would like to work for some company, and then you could have related it. So because XLD, the name itself says Excel Dynamics, because the name itself says dynamic, I'm also a kind of person who is dynamic in nature, and that was the reason I was able to maintain a balance between my academics and my sports. And so, because I'm a sports person, I can assure you that I won't be looking forward for a lot of leaves, unplanned leaves. I would be a person who would be okay working with night shift because I'm strong enough, as I have always been into sports. Maybe Okay. you could have come up, you have to connect the dot. बिकॉज कैसे भी करके हमको वो गैप को तो फिल करना पड़ेगा, राइट? Mm-hmm. विच इज देयर, बिकॉज गैप वुड बी अ मेजर इशू. दे डू आस्क, और वो जानबूझकर उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दैट दे कैन गेट स्ट्रॉन्ग आंसर्स. जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके सामने आएगा, दे वांट टू हायर दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट ओनली. तो बस इस आंसर को, इफ यू विल, आई गेस, अगर इसका एक कुछ वैलिड सा आंसर यू कैन प्रिपेयर, यू वुड बी सिलेक्टेड, यू वुड बी हायर्ड. बस ये वाला एक गैप हो गया है, वहां पर मुझे लगता है रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि Yes, ma'am. स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है XLD के साथ. अर्लियर 2017-18 में तो उनके साथ हायर एंड फायर वाला पॉलिसी था. अब उनके अच्छा. साथ ये इशू हो गया है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, जो सीधा ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, भले वो MBA वाले हों या ग्रेजुएट्स हों, स्टेबिलिटी वाला इशू उनके साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर तो है काम का. स्ट्रेस Mm-hmm. इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा ना जेल जैसा माहौल फील होता है. There is a strict environment because of the process. They are working with mortgage, they are working with US client. तो जाहिर सी बात है, उनका process और उनका जो environment है, working culture है, that is strict. So most of the students leave. अच्छा. And because तुमने पहले ही उनको ये बता दिया कि स्पोर्ट्स करियर
ना करियर में स्पोर्ट यू वांटेड टू मेक इट एज योर करियर, और एक्सएलडी तो बस अभी वो गैप को फिल करने के लिए तुम यूज कर रहे हो या ज्वाइन करना चाह रहे हो, इसीलिए ये मेजर कंसर्न हो गया कि मे बी दे हैव नॉट एक्सेप्टेड योर कैंडिडेचर. सो एज फार एज आई फील बस इस पे काम करना होगा. और जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरा होगा उसमें उनको विजिबल ही हुआ होगा कि गैप है, इसीलिए वो क्वेश्चन भी इसीलिए अराइज हुआ कि वो गैप है. तो इसके लिए बस यू नीड टू वर्क. अब अच्छा, सिर्फ वो वर्ड जो आपने बोल दिया था ना कि यू वांटेड टू परस्यू स्पोर्ट्स एज योर करियर, उसको हटा के यू नीड टू से समथिंग एल्स. स्पोर्ट्स मेंशन नहीं करना है मैम नेक्स्ट टाइम. हाँ, स्पोर्ट्स मेंशन नहीं करना, क्योंकि आप फ्रेश अप्लाई करोगे तो गैप तो दिखेगा. जब गैप दिखेगा तो ये बोल देना कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम योर स्कूल डेज यू वर वेरी मच एक्टिव इनटू स्पोर्ट्स, एंड देन आफ्टर योर ग्रेजुएशन you took a break to pursue sports as your career. But meanwhile, you Okay. felt that no, sports won't be the right choice for you. If you would like, you can talk about your long term goal in this case. Then you Okay. can say that later on, I thought that sports, I could pursue sports as my hobby, but not as a career. And I felt kind of Excel Dynamics kind of company could be an appropriate fit for you because you are from BCA background. BBA background, you know how to manage things, and financial analyst is a kind of position where you would be managing finance related things. Or maybe you can add up, you were very good in your analytical skills, and that is Okay. the reason you would like to apply for a financial analyst post with XLD. Also, you can say that because you were into sports, you are a kind of dynamic person, and XLD, while you were going through the website of XLD, you found that your skill attributes matches with the requirements of the company. And so that is the reason I would like to be a part of this company. बिकॉज देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, वो आप फिलफिल कर रहे हो. हाँ एलिजिबिलिटी जी. क्राइटेरिया क्या है? यू नीड टू बी गुड इन योर कॉम, वर्बल एंड रिटन. तो वो तो तुम्हारा अच्छा था तभी तुमने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, राइट? तो दो मैच तो यहाँ पर मिल गए. तीसरी जो चीज मिलती है वो ये है कि आप शिफ्ट में काम करोगे कि नहीं, उसके लिए भी आपका आंसर यस था. रिलोकेशन के लिए भी योर आंसर वाज यस. तो जो जहां पर आप छूट गए, जहां पर आप मात खा गए सिलेक्शन में, दैट इज ओनली दिस स्टेबिलिटी वाला इशू. क्योंकि Okay. एज अ फ्रेशर उनको स्टेबल कैंडिडेट चाहिए है जो उनके कंपनी के साथ कम से कम 2 साल तक स्टिक करके रहे. जहां तक बॉन्ड का सवाल है, बॉन्ड तो देखो देयर इज नो बॉन्ड एज सच. ये सिर्फ बॉन्ड की बात इसलिए पूछते हैं अगेन टू चेक दी स्टेबिलिटी. आपसे हो सकता है अच्छा. बॉन्ड वाला क्वेश्चन बाद में पूछा गया, पहले वो गैप और स्पोर्ट्स वाला चीज पूछ ली गई, तो आप हाँ वहीं जी पे मैम. कहीं पर गैप आ गया कि करियर स्पोर्ट्स में परस्यू करना चाहते थे, और ऊपर से तुमने ये भी बोल दिया कि लॉकडाउन की वजह से. यू गेव देम अ रीजन ओके. विच विल डेफिनेटली, मेरे दिमाग में भी ये चीज आई ना. मैं रिक्रूटर नहीं हूँ, हम्म. फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज आई कि भाई इस बंदे को मैं रिक्रूट करूंगी और चीजें ठीक होंगी तो वापस ही अपने स्पोर्ट्स में चला जाएगा, क्योंकि इसका पैशन है जिसके कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी, गैप किया इतने साल का. तो जाहिर सी बात है वो बंदा फिर चला जाएगा अपने वापस फील्ड में, तो इसको ट्रेन करने से क्या फायदा है ना? 3 महीने तुम्हारे ऊपर खराब करने से क्या फायदा है? तो नेक्स्ट राउंड में मे बी वो जो गैप है, गैप का आंसर कुछ और हो सकता है. कितने साल का गैप है? मैम 3 years. 3 years. एंड नाउ यू टेल मी कि क्या था वाकई में, मतलब सीन क्या है ग्रेजुएशन के बाद? मैम इज इट ग्रेजुएशन के बाद सीन तो ये मैम यही था सीन. क्रिकेट तो परस्यू करना था मेरे को. थोड़ा ओके? इंजरीज था बीच में, एक दो ओके. इंजरीज की वजह से भी थोड़ा पीछे हो गया. ओके. और 1 साल तो बीच में कोई काम ही नहीं कर पाया क्योंकि एक लोअर बैक इंजरी की वजह से बहुत टाइम तक मेरे को. और बीच में लॉकडाउन भी था तो थोड़ा बिगड़ गया हम्म. इंजरी. हम्म. और लॉकडाउन के बाद फिर रिहैबिलिटेशन हुआ, 3 महीने का रिहैब कराया फिर. तो अभी काफ़ी अच्छा है पहले से. तो ओके. उसके वजह से स्पोर्ट डॉक्टर ने भी अभी कहा है कि थोड़ा टाइम अभी स्पोर्ट्स से दूर रहना है. तो अभी मैम स्पोर्ट्स में एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. 24 राइट नाउ. तो अभी राइट. इस राइट. टाइम से दोबारा जीरो से स्टार्ट करना मैम पॉसिबल था नहीं मेरे लिए. तो इसलिए मेरे को एकेडमिक्स पे वापस आना पड़ा. ओके. यू मीन टू से कि अब इसको परस्यू करना, देन व्हाई एक्सेल डायनामिक्स ओनली, और यू आर लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज एनी I'm looking which? for a stable job, ma'am, and XLD is, I think it's a stable job for me to start with. It's giving me the boost. Mm-hmm. Yes, ma'am, it's giving me the boost to start well. Right. I feel that because they have no such high, eligibility criteria, only graduate. हाँ जी. Either you are from हाँ. any domain, they are hiring, and package is also good.
अब Yeah. अमिताभ ये भी ध्यान में रखना होगा कि मान लो फिर कोई एलाबोरेट करने भी बोलता है ये गैप वाली चीज को, तो अभी हम मैं जानबूझ के इसीलिए ये सब पूछी कि हमको तभी ये चीजें हमें नहीं बोलनी है कि इंजरी था या प्रॉब्लम था, क्योंकि ये वाला भी नाइट शिफ्ट वाले में ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो मेरे को पता था मैम, इसलिए हम वो इंजरी वाला बात हम उस टाइम पे बोलना हम्म मेरे को ठीक नहीं लगा, तो फिर हम हम्म। गैप ये दूसरा कुछ तो बोल। तुम स्पोर्ट्स वाला अगर छोड़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्स वाला छोड़ दो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वही एचआर मिलता है या वही चीजें होती हैं। और थोड़ा सा ऑनेस्टी वो वाला इशू रहता है कि कहीं पर क्रॉस चेक ना करे कि पहला इंटरव्यू हाँ। क्या था, सेकंड क्या है। तो ऐसा बोल सकते हो कि पर मुझे लगता है यू कैन चेंज योर थिंग, यू कैन से कि स्पोर्ट्स वाला एक फैक्टर था, यू वांटेड टू परस्यू, बट लेटर ऑन आफ्टर अ ईयर और सो यू रियलाइज दैट it's it is just your passion, you won't be able to make money out of it, maybe you can't ओके। pursue it as a career, it is only your passion. So sir, sports was my passion which I wanted to do, and for the 2 years or 3 years I was into sports, I was playing sports. But then I later on realized that I would be doing something for earning bread and butter. And I also went through the website of XLD where I found that my eligibility criteria, my personal attributes matches with their requirements, and that is the sole reason sir I would like to be a part of this dynamic company. बस इतना खत्म। क्योंकि उनको और ओके। कुछ चाहिए ही नहीं है, वो बस एटीट्यूड चेक करते हैं, तुम्हारा कॉम वगैरह सब अच्छा था तभी तो तुम क्रॉस करके पीआई राउंड तक पहुंचे, राइट? लोग तो उसी में रह जाते हैं, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग, एंड यू आर गुड इन योर कॉम स्किल एज वेल। एज फार एज वी हैव इंटरैक्टेड, आई फाइंड यू एज अ वेरी suitable candidate whom I would be love to take on board with XLD. But the only थैंक यू मैम। thing is, मोस्ट वेलकम, बट द ओनली थिंग इज ये वाला चीज को थोड़ा सा इसको अब घुमा के बोलना पड़ेगा। और देखो ज्यादा 3 साल का गैप है, पर अगर तुम एमबीए करते या कुछ भी करते तो 2 साल पीजी के लिए तो देते ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो गई है कि ना पीजी वीजी करने के बाद वो गैप दिख रहा है। तो ग्रेजुएशन के बाद तुम बोल सकते हो, या फिर तुम चाहो अगर बाद में मान लो जिस दिन तुम अप्लाई करोगे और दूसरा एचआर तुमको नजर आ जाता है, क्योंकि अलग अलग एचआर लेते हैं, अगर एचआर चेंज हो जाए ना तो तुम चेंज भी कर सकते हो अपने आंसर्स को। इट वोंट अफेक्ट, बिकॉज कोई इतना नहीं करता है, इतना उनका डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कोई क्रॉस चेक नहीं करता है इतना कि उसने अच्छा। क्या बोला था। हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं रोज, ठीक है? तो अगर तुमको दिख जाए कि उस दिन के लिए, जब आगे चल के अगर ऐसी चीजें होती हैं दूसरा एचआर दिख जाता है, तो तुम उस गैप को ऐसा भी बता सकते हो कि आफ्टर ग्रेजुएशन यू वेर ट्राइंग टू परस्यू और गो फॉर एमबीए, बट लेटर ऑन you were doing something more you were trying to upgrade your skills. और ऐसा करने के लिए तुम क्या कर लो कि कुछ अगर कुछ चीजें, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं भी है शो करने के लिए, तो कुछ भी एक आध दो चीजों के बारे में बोल सकते हो, दैट यू डिड समथिंग इन यू वर लर्निंग कंप्यूटर्स, और यू वर लर्निंग एक्सेल, यू वर लर्निंग टैली, कुछ भी। अब वो तुम थोड़ा सा भी 3 महीने का टाइम मिलेगा, यू सी कि क्या चीज सही भी लगे बोलने में और हो भी तुम्हारे अंदर, सो दैट यू कैन से कि इतना गैप में मैं ये काम कर रहा था, आई वॉज नॉट सिटिंग आइडल, बट आई वॉज डूइंग समथिंग। मैम कहीं वो सर्टिफिकेट के लिए पूछे तो? नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं किसी चीज का। और अभी देखो, अभी बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे भी कोर्सेज हुए, या पहले भी ऐसे कोर्सेज होते थे जहां पर आपको नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो देखो तुम बनवा भी सकते हो, राइट? आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू या। एग्जांपल। उडेमी या बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हुए थे भी हाल फिलहाल में कि आप कोर्स कर लो, पर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना होता था $10 $20। तो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने उस चीज को ऑप्ट नहीं किया। पर हाँ, ये चीज फिर बिल्कुल अच्छे से निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम घुमा रहे हैं, क्योंकि एक्सएलडी का इंटीग्रिटी और ट्रूथ का बहुत ज्यादा इशू होता है। एक चीज ये भी कर सकते हो, दूसरा यही करो कि स्पोर्ट्स को बताओ, बोलो कि तब बहुत ज्यादा पैशनेट थे, आफ्टर ग्रेजुएशन यू वर वेरी मच पैशनेट अबाउट इट। But sir, after I have spent my 2 years, this is only the gap, but I was not sitting idle at home. I was into sports. I was involved in this. And meanwhile, I was into sports. I did develop other attributes like how to work in a team, how to keep myself fit, how to keep myself mentally healthy. Because ये सारी चीजें जॉब में भी तो required होती है ना। तो ऐसा लिंक करने की बस कोशिश करना आंसर्स को पॉजिटिव वे में। अभी क्या हुआ, अभी तुम्हारा जो आंसर था वो निगेटिव गया, क्योंकि तुमने अच्छा। एक्सक्यूज दिया। तुमने ये एक्सक्यूज दिया कि अभी मेरा वहां पर कुछ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एक्सएलडी आना चाह रहा हूँ।
दूसरा आंसर जब अभी दोगे तो अभी ऐसा उसको अप्रोच करना है कि आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दिस इज अ डायनामिक कंपनी विच बिलीव्स इन नो क्वालिफिकेशन, क्योंकि एक्सएलडी का तुम वेबसाइट पढ़ना, उसमें लिखा है कि अगर आप उनके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट अ बैरियर। ठीक है, तो उन्हीं के वेबसाइट से चीजों को उठा लो, और उनके वेबसाइट पे कई जगह पर लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी दिए हुए हैं। अच्छा। चाहो तो टेस्टिमोनियल्स में से दो चार कीवर्ड्स उठा लो, जैसे कई लोगों ने लिखा है कि बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट है, कई लोगों ने लिखा है कि मेरा स्किल्स यहाँ पे बहुत अपग्रेड हुआ है, किसी ने बोला है कि यूएस क्लाइंट के साथ काम करने के कारण मेरा जो थिंकिंग है और ये सारी एनालिटिकल जो चीजें हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग है, ये सारी चीजें इनहांस हुई हैं। तो you might use few of the keywords from there, those are power words. तो इससे क्या होगा ना, जो एक्सेल डायनेमिक्स में चीजें लिखी हुई हैं वही वर्ड उठा के तुम अपने आंसर्स में फ्रेम करोगे तो that will exactly match. So this is how you need to prepare, Amitabh. Otherwise I don't think there is any other reason कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया होगा। मेरे ये को लग रहा है आंसर, मैम स्पोर्ट्स वाला अच्छा आंसर है, मतलब आई हाँ, कैन मेक झूठ भी स्टोरीज नहीं अबाउट होगा इट। और अच्छा भी होगा, यस राइट। हम्म। उसको कनेक्ट कर दो बस, स्पोर्ट्स का जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का एट्रीब्यूट्स होता है और जो एक्सेल डायनामिक्स को चीजें चाहिए, जस्ट कनेक्ट विथ इट। ओके। And you can always start your answer, sir, that is very true that you can see a gap in my resume, in my career, but exactly the thing is different. There might be a gap over there, but I have fulfilled all those gaps by learning more things which was required at that time. और उसके बाद कुछ भी दो चार पांच चीजें जो तुमने उस दौरान सीखी उसके बारे में तुम बात कर लो। या तुमने, मान लो तुम क्रिकेट में अगर पैशनेट है, तुम यही बोल दो कि मैंने दो चार बच्चों को उसकी, अगर तुम्हें आती है उससे रिलेटेड सारी चीजें, तो ऐसा कुछ बोल दो कि तुम उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। या तब तुमको किसी तरीके से ऐसे भी बता सकते हो कि फैमिली को सपोर्ट करना था मॉनेटरी वे में, तो वी आर डूइंग सम ट्यूशंस और समथिंग लाइक दैट। अब इसका तो कोई नहीं मांगता है ना प्रूफ। तो अगर तुम ये भी बोलते हो तो गलत नहीं जाएगा। जब हम ये बोलते हैं ना कि हम मॉनेटरी अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि इस कैंडिडेट को जॉब की जरूरत है तो वो जल्दी जॉब छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी ओके। स्टेबिलिटी इशू कनेक्ट हो जाता है कि बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वुड लाइक टू अर्न ब्रेड एंड बटर, हु वुड लाइक टू सपोर्ट हिज फैमिली इकोनॉमिकली ऑन अ मॉनेटरी बेसिस, तो इसको जॉब का जरूरत है, तो इसको हम हायर करेंगे तो ही विल स्टिक विद द कंपनी बिकॉज ही नीड दैट जॉब। तो ये चार पांच ऑप्शंस हैं अमिताभ, यू कैन फ्रेम योर आंसर्स, वी कैन ऑल्सो कनेक्ट कभी भी बाद में भी कभी लगता है, यू कुड गिव मी अ कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी ओके। उस पे चाहो तो उस पे एक बार चाहो तो फ्रेम करके आंसर्स को जॉट इट डाउन समवेयर, मे बी रिकॉर्ड योर वॉइस, रिकॉर्ड योर ऑडियो ओके। एंड देन शेयर विद मी। ये एक रीजन मुझे अभी तो मैं होती अगर तो यही लग रहा है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज आई विल मैम, शेयर। या प्लीज गो अहेड yeah, there अमिताभ। is one more issue, ma'am, that I हम्म would like to share with you. हम्म उन्होंने मेरे से परसेंटेज के बारे में पूछा था। हम्म I got 54 आई percentage in सॉ my दैट। graduation. हम्म Yeah, so he told me that that's a little low. Don't you think that it's a bit low? So I told him, I tried to convince him by saying that my highest percentage that goes in my class was about 68 percentage. So Calcutta University is a little, you know, miser in हम्म terms of giving marks to हम्म the students. हम्म So I tried to convince him by saying यू this. कन्विंस्ड हिम इन So अ रॉन्ग वे, यू नो व्हाट, okay, ऐसा करते हैं बच्चे। ये भी ना एज अ एक्सक्यूज लग रहा है okay, कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, rather than accepting the truth you are giving excuse. Though I understand, as a trainer मैं ऐसे ही बच्चों को समझाती हूँ, I can understand your answer is not wrong, पर अगर मैं एक्सेल डायनामिक की अगर एचआर हूँ तो मैं इसको एज अ एक्सक्यूज ट्रीट करूंगी। ठीक है, okay, तो यहाँ पे दो दो एक्सक्यूजेस मिल गए उनको। अब देखो इसी की जगह तुम ये बोल सकते हो, अगर कभी फिर से गैप वाला इशू आए, मैं भी देख रही थी देयर इज अ गैप, यू कैन से सर आई एडमिट दैट माय परसेंटेज वेंट डाउन and there is a reason to it. Definitely I accept the fact that the percentage is not so good, but while I was in my graduation I was also involved in few other activities, as apart from academics there are few other things which is required to develop overall personality। और फिर स्पोर्ट्स वाला ही बता दो। स्पोर्ट्स वाला मैंने बताया था मैम उनको कि हम्म since I was also into sports, I was not able to concentrate fully on my studies. So हम्म I agree. I accept that my marks is a bit low, ओके but that's only because I was too passionate about cricket.
You said this, or you said the Yes, earlier one, I which you said Calcutta University में I ज़्यादा था? mentioned Both. I mentioned both the points, ma'am. So now Calcutta वाला यूनिवर्सिटी वाला हटा देना, just mention this cricket वाला. Okay. पैशन के बारे में बस बात करना. और देखो उनको तो, उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये तो लिखा ही नहीं कि उनको 60% थ्रू आउट चाहिए. Mm-hmm. ठीक है, उनको तो कोई भी चलेगा जो सूट होता है. पर वो फिर अगेन तुम्हारा जो वाकई में जो तुम्हारा बिहेवियरल क्वेश्चंस हो गया एक तरीके से, ये तुम्हारा क्या रियल अमिताभ क्या है, ये देखने के लिए उन्होंने इस क्वेश्चंस को बार बार बोला. एंड अच्छा. नाउ इट विल डिपेंड ऑन दी रिक्रूटर एज वेल. हो सकता है वो चेंज हो जाए. कई बार ये होता है ना, Mm-hmm. उनके पास फ्रेम्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उनके दिमाग में जो Okay. आता है वो वही पूछ लेते हैं. Mm-hmm. बस हमको ये कोशिश करनी है कि यू कम आउट एज अ पॉजिटिव कैंडिडेट जो हर हाल में वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सएलडी. Okay. ये रीजंस हो सकते हैं. फिर तो ऐसा है अमिताभ, देखो मुझे तो यही लग रहे रीजंस हो सकते हैं. बाकी इट डिपेंड्स, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन एचआर ऑल्सो. कई बार आप देखोगे अभी बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं वीडियोस पे, कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु वर Mm-hmm. वेरी गुड बट दे वर Okay. नॉट सिलेक्टेड. तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा है, मुझे लग रहा है रीजन ये कि एक बच्ची है, वो सीए वगैरह का भी उसने कोर्स किया हुआ है, तो वो ओवर क्वालिफाइड भी बंदे नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फिर से वो स्टेबिलिटी वाला इशू लगता है कि अभी तो टाइम बिंग ये आ जाएंगे, और इनको जब Mm-hmm. सीए और इनका सब चीजें हो जाएंगी तो दे विल अगेन गो बैक टू देयर रिक्वायर्ड और जो भी उनका पैशन है. तो उनको ग्रेजुएट्स ही चाहिए ज्यादातर, और ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए जो बहुत ज्यादा पैशनेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी. Okay. तो Amitabh, I feel you will be selected now again. Okay. तो Yes, ma'am. I think this helps me a lot, ma'am. Actually, yeah, actually gives me a this, sense of clarity. I feel so. I feel so, like being in this profession from a decade. I feel these kind of answers. Sometimes, if I was also an HR, I would have taken you as a candidate who comes out to be a very strong, very subtle kind of candidate. But yes, Okay. because I got two of the excuses, and the major one I feel is the sports one, where you said that you wanted to pursue sports as your career, but because Mm. of lockdown, you again came back to academics.